Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the whether a statutory auditor is liable to do the tax audit. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. And also my request to all of you, please like the video and share with the maximum members so that maximum members can take the benefit of our videos. So regarding this today's topic, whether a statutory auditor is liable to do the tax audit, whether it's his duty, whether it's a liability, कि सिर्फ statutory auditor ही tax audit कर सकता है. So what's mentioned in the Companies Act, or whether what's mentioned in the Income Tax Act, that we will discuss. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed the views of the ICAI, CSNSR, or any other person or any other authority. Please don't take it any legal opinion or the legal advice, and also professional opinion or the professional advice. And the purpose of this video is to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please also go through the ICI guidance note on the tax audit, relevance income tax section, relevant companies act section, any notification circular, all that you can check it out. So regarding the statutory auditor, whether he is liable to do the tax audit, first thing, if we go to the section 44AB, section 44AB में it prescribes every person covered under section 44AB clause A, B, C, D, E shall get his accounts of such previous year audited by an accountant before the specified date. So here the word is accountant. Then in explanation to section 44AB, it talks about the accountant का meaning क्या है. Accountant shall have the same meaning as in the explanation below subsection 2 of section 288. तो accountant they have defined in subsection 2 of section 288 जो explanation में accountant को define किया है. तो accountant in the explanation to section 288 subsection 2 of the Income Tax Act, it talks about accountant means a chartered accountant as defined in clause B of subsection 1 of section 2 of the Chartered Accountant Act 1949, who holds a valid certificate of practice under subsection 1 of section 6 but does not includes. तो उसमें कुछ इनएलिजिबिलिटी है जिसके ऊपर हमने पीछे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था, इन एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ टैक्स ऑडिटर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको आप चेक कर लेना. सो नोवेयर इन सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AB में कहीं नहीं लिखा कि ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल डू द टैक्स ऑडिट. Here the word is accountant. Accountant कौन है? Chartered accountant who are into practice, except कुछ exceptions हैं कंपनी के केस में, अदर केसेस में, वो आप चेक कर लेना. बट कहीं भी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं लिखा. एंड इफ वी चेक द सेक्शन 144, आप एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं किसी भी कंपनी में या सम अदर स्टैच्यू, यू हैव टू सी द स्कोप ऑफ वर्क कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा है, कि सिर्फ आपको ऑडिट ही करना है उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट, या सम अदर सर्विसेज लाइक टैक्स ऑडिट या सम अदर सर्विसेज, दैट यू हैव टू सी. तो सेक्शन 144 व्हाट इट सेज of the Companies Act 2013, auditor not to render certain services. So an auditor appointed under this act shall provide the company only such other services as are approved by the board of directors or the audit committee. So audit, if you are appointed as auditor of a company, तो आपको audit करना है उस कंपनी का, that's your if you are appointed as the statutory auditor, that's
you have to complete, that's your duty. उसको आप आपका एक बाउंडिंग ले लो, you are liable to do the statutory auditor of that company if you are appointed as statutory auditor of that company. But in case some other services, tax audit is not your part. टैक्स ऑडिट नॉर्मली अगर आप एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होते हो, देन इट्स नॉट योर ड्यूटी, यू आर नॉट लायबल टू डू द टैक्स ऑडिट. बट यस, इफ इट्स इन योर स्कोप, अगर आपके अपॉइंटमेंट लेटर में है, अगर आपके जो स्कोप में है उसमें इट्स मेंशन दैट ऑडिटर हैव टू डू द टैक्स ऑडिट, in that case only you can do the tax audit. वो भी if it's approved by the board of directors or the audit committee. So in that case you have to check the minutes. आपको उसका रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि आपने अप्रूव हुआ था वहां पे कि ऑडिटर विल डू द टैक्स ऑडिट आल्सो. उसके अलावा कुछ अदर सर्विसेज हैं विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज एन ऑडिटर यू कैन नॉट प्रोवाइड. तो उसमें क्या सर्विसेज हैं? accounting and bookkeeping services, internal auditor, designation and implementation of financial information system, actuarial services, investment advisory services, investment banking services, rendering of outsourced financial services, management services, any other kind of services as may be prescribed. And this is directly or indirectly through holding or subsidiary. और इसमें कहीं भी नहीं मेंशन नहीं है कि आप टैक्स ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते. सो you can do the tax audit. If you are auditor of a company, you can do the tax audit of that company, but that only if it's authorized by the board of director and the audit committee. उसी केस में आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट यू हैव टू सी योर अपॉइंटमेंट लेटर. आपको उनका मिनट्स चेक करने हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करना है, वेदर इट्स अप्रूव्ड और नॉट. अपनी मर्जी से नहीं कि मैं ऑडिटर अपॉइंट हो गया इस कंपनी का तो मेरे को टैक्स ऑडिट भी करना है. नो, आई एम नॉट लायबल टू डू द टैक्स ऑडिट इफ आई एम ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी अनलेस एंड अनटिल इट्स इनटू माय स्कोप. मेरे जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें मेंशन है स्कोप ऑफ द वर्क में कि टैक्स ऑडिट भी मेरे को कंप्लीट करना है. इवन ICAI इन देयर गाइडेंस नोट, उसमें ICAI ने भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है इन जो भी रिसेंटली गाइडेंस नोट आया है, दैट सेक्शन 44AB stipulates that only chartered accountants should perform the tax audit. This section does not stipulate that only the statutory auditor appointed under the Companies Act or the similar statute should perform the tax audit. Means अगर मैं किसी कंपनी के अलावा भी कहीं और भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर और ट्रस्ट या कहीं भी अपॉइंटेड हो, तो इट डजंट मीन्स कि आई हैव टू डू द टैक्स ऑडिट ओनली. मेरे को टैक्स ऑडिट भी करना है, स्टैट ऑडिट भी करना है, टैक्स ऑडिट भी करना है. नो, ICAI in their guidance note clearly mentioned कि 44AB जो है it talks about only about the chartered accountant. कहीं भी वर्ड यूज नहीं है कि statutory auditor under the Companies Act or some other similar statute should perform the tax audit. And such tax audit can be conducted either by the statutory auditor or by any other chartered accountant in full time practice. वहां पे वर्ड जो है अकाउंटेंट जो डिफाइन किया है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 288 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर इनटू फुल टाइम प्रैक्टिस, वो जो वहां पे हमने अभी देखा था 288 में डिफाइन किया था. तो कहीं भी वर्ड नहीं है 44AB में स्टैट्यूटरी ऑडिटर का. इफ यू आर ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर यू आर नॉट लायबल टू डू द टैक्स ऑडिट अनलेस एंड अनटिल इट्स गिवन इनटू द अदर सर्विसेज. आपको अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ इसमें डायरेक्टर्स में या ऑडिट कमेटी में कि यस यू कैन आल्सो प्रोवाइड द टैक्स ऑडिट सर्विसेज. अगर नहीं है तो यू आर नॉट लायबल. एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कर सकता है अगर उसको कंपनी ने अपॉइंट किया एज ए टैक्स ऑडिटर. सो एज ए ऑडिटर इट्स यू आर नॉट लायबल, इट्स नॉट योर ड्यूटी टू डू द टैक्स ऑडिट. सो दिस इज रिगार्डिंग टूडेज टॉपिक, जिसके ऊपर थोड़ी सी एक दो क्वेरीज आई थी कि वेदर एज ए चार्टर्ड अकाउंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आई कैन डू द टैक्स ऑडिट और नॉट. यस यू कैन डू, बट only if it's authorized by the board of director or the audit committee. Otherwise अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि yes I am the statutory auditor, मेरे को ही करना है इस कंपनी का टैक्स ऑडिट, मेरे को ही करना है, इट्स माय ड्यूटी या इट्स माय ऑब्लिगेशन. ऐसा कुछ नहीं है या मेरा राइट है. ओनली इफ इट्स ऑथराइज्ड, अदरवाइज कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू. सो थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन, एनी फीडबैक, you can write into the comment box or you can message or mail me. So bye bye, take care, see you very soon.